Jai Charanarinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Hari Rajakacharya Astakara Shreekrishna. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Srila Prabhupada ki Jai. Srila Namacharya Haridas Thakur ki Jai. Anantapurti Vaishnavinda ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Shri Shri Gauranitai ki Jai. Shri Shri Vithalukmai ki Jai. Shri Shri Radha Pandrinath ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the Sama devotees. Hare Krishna. All glories to the Sama devotees. Hare Krishna. All glories to the Sama devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga. Gaur. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Rasapayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhakti Bhavati Naishtaki Krishna Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Text number 10. श्रीमद् भागवतम से पाठ करेंगे 11वां स्कंद 10वां अध्याय और 10वां श्लोक. Chapters entitled The Nature of Fruitive Activity. अध्याय का शीर्षक है सकाम कर्म की प्रवृत्ति. Please repeat after me. कृपया आप सब मेरे पीछे बोलिए. Yo sarvune virachito. Yo sarvune virachito. Yo sarvune virachito. Yo sarvune virachito. Dehoyam purushasya hi. Dehoyam purushasya hi. Dehoyam purushasya hi. Dehoyam purushasya hi. Samsarastadvibhandoyam. 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 Samsarastadvibhandoyam.
पुंसो विद्याचिदात्मनः पुंसो विद्याचिदात्मनः योऽसो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्थनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः योऽसो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्थनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः Please chant. Yoso guణैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्थनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः योऽसो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्थनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः योऽसो गुणैर्विवर्जितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्थनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः जी योऽसो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्थनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः योऽसो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्थनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः यः which जो go ahead Dhamraj बोलिए यह जो ऐसा वह सूक्ष्म शरीर भौतिक गुणों द्वारा विरचितः निर्देह शरीर अयं यह स्थूल शरीर पुरुषस्य भगवान का ये निश्चय संसारः जगत निबंधः उससे बंधा हुआ अयं यह पुंसः जीव का विद्या छिन्न करने वाला आत्मनः आत्मा का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद जय। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की उत्पत्ति प्रकृति के गुणों से होती है जो भगवान की शक्ति से विस्तार पाते हैं। जब उनके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के गुणों को अपने असली स्वभाव के लिए मान लेता है तो संसार का जन्म होता है, किंतु यह मोहमयी अवस्था बाह्य ज्ञान द्वारा नष्ट की जा सकती है। तात्पर्य, जहाँ तक ईंधन तथा अग्नि की उपमा शरीर तथा आत्मा से दिए जाने की बात है, यह तर्क किया जा सकता है कि कुछ हद तक अग्नि ईंधन पर निर्भर करती है और वह
उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हमें आधुनिक के अस्तित्व का अनुभव ईंधन से पृथक रूप में नहीं है। तो भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि यह किस तरह संभव है कि जीव शरीर से पृथक रहे, उससे प्रच्छन्न होकर अंत में पृथक हो जाए। जीव के स्वभाव को भगवान की विद्या द्वारा ही समझा जा सकता है। विद्या अर्थात आत्मिक ज्ञान से भौतिक जगत को खंड खंड किया जा सकता है और इसी जीवन में आध्यात्मिक सत्य का अनुभव हो सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार हमारा अस्तित्व कृत्रिम रूप से आरोपित है। भगवान के अचिंत्य अविद्या द्वारा सूक्ष्म चेतनों के गुण जीव पर मनोवैज्ञानिक रूप से लादे जाते हैं और शरीर के साथ गलत पहचान करने से जीव अनेक मोहे कर्म करने लगता है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, वर्तमान शरीर मृत्यु में जो अगले शरीर के कर्म बीज उत्पन्न करता है, किंतु ज्ञान के चक्र को दिव्य ज्ञान के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, जैसे कि भगवान ने बताया है। दुर्भाग्य से बद्ध जीव भगवान के चतुर्थावश उनके द्वारा बताए पूर्ण ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, बजाय इसके सूक्ष्म मोह में पड़े रहते हैं। किंतु यदि जीव भगवान के ज्ञान को मान ले तो उसकी सारी स्थिति सुधर सकती है और वह भगवान के साथ सीधे संपर्क द्वारा पूर्ण ज्ञान का सच्चिदानंद स्वरूप जीवन प्राप्त कर सकता है। Yoso guner virachito dehoyam gurushasyahi samsarastham nibandhoyam kumsam vidya chit bhatmanaha. Om jnana chinandasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam jena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Padamayam Kadati Svapadantikam Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Acharane Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhuna Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So I'm very happy to be here this morning in Sri Pandharpur Dham. I'm very grateful for this opportunity to speak on Srimad Bhagavatam this morning. Thank ISKCON Pandharpur management for giving me this opportunity. Thank you, Prahlad Prabhu. Thank you, Premanji Prabhu. Thank you, Dhanadhar Arjun Prabhu. Thank you, all the. So please pray for me. I can speak something for my own purification. And for the benefit of all the listeners today. Bahut bahut dhanyawad. Hare Krishna. So in this section of Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Text 10, the chapter is called Nature of Fruitive Activity. जो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद है, 10वां अध्याय और 10वां श्लोक है और इस अध्याय का नाम है सकाम कर्म की प्रकृति. And we're
in a discussion to try to understand that we're not this body. तो इसलिए चर्चा की जा रही है कि हम ये शरीर नहीं है। The soul is transmigrating from one body to the next. तो जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रहा है। Arvartino Juna Mamupecha Tukantaya Punarjanma Navidyate. That the Atma is moving from one body to the next, from the lowest planetary systems to the highest planetary systems and back again. तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में और निचले ग्रहों से लेकर ऊपर तक भी जा रहा है। And as the Atma transmigrates from one body to the next, he's experiencing so many difficulties and sufferings. तो जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में तो हर समय जब भी जीव शरीर धारण करता है भौतिक जगत में तो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख हर समय सताते रहते हैं। The Atma is also experiencing miseries, Adhyatmic Klesh, Adhibautik Klesh, Adhidaivik Klesh, miseries from the body and the mind, miseries from other living entities and miseries from nature. तो जो आत्मा है साथ ही साथ आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक क्लेशों का भी अनुभव करता है। तो शरीर के द्वारा मिलने वाले कष्ट, दैविक प्रकोप से मिलने वाले कष्ट और स्वयं के मन के कारण होने वाले कष्ट। So no one can deny that there is suffering in this material world. कोई भी नहीं कह सकता कि भौतिक जगत दुख नहीं है। One time my mother told me, "Why do I need God? I'm happy. Everything is good." एक बार महाराज अपना अनुभव बताते हैं, उनकी माँ ने उनसे कहा कि हमें भगवान की कोई जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही सुखी रह रहे हैं। But how long will it last? लेकिन हम कब तक ऐसे सुखी रह? After a few years, she contracted cancer. कुछ समय के बाद ऐसी हुआ कि उनकी माँ को कैंसर हुआ, ज़्यादा समय रहने की, फिर भी जगत को छोड़ के जाना पड़ा। So no one can deny the time of death will take everything away. कोई भी इसको नहीं कह सकता कि मृत्यु के समय हमारे सब कुछ छीन लिया जाएगा। What happens at the time of death? मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है? Some people, they think that at the time of death everything is finished. कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। That you do your work in this world and you get some material benefit and you enjoy, and at the end of life it's finished. तो ऐसे कहते हैं कि आप बस जगत में रहो, कुछ कर्म करो, उसका फल मिलेगा, उसको भोगो और बस खुश रहो। Therefore, as Charvik Muni says, beg, borrow, steal, but eat ghee. जैसे चारवाक मुनि कहा करते थे कि आपको क्या करो, अगर चोरी करो, उधार लो या खरीदो, लेकिन क्या करो, आपको घी पीना है। Just try to enjoy this world. हम क्या करेंगे, इस जगत का आनंद उठाएंगे। Because at the end of life there's nothing. क्योंकि जीवन के अंत में कुछ भी नहीं रहेगा। I used to think this when I was a small child. महाराज जी में जब छोटी उम्र में था ऐसे सोचा करता था। I thought at the time of death the worms will eat you and everything is finished. तो मैं ऐसा सोचता था कि मृत्यु के बाद तो हमें सब कीटाणु खा जाएंगे और सब समाप्त हो जाएगा। And it's very easy to be misguided by the wrong association to have this idea. तो ऐसे गलत धारणा के लिए गलत संग प्राप्त होना मतलब बहुत ही आजकल ऐसे संभव हो रहा है। So how can we understand what is the actual truth? तो हम कैसे समझें कि वास्तव में सत्य क्या है? It is Lord Krishna's message in Bhagavad Gita. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अपना संदेश देते हैं। Dehinosmin yatha dehe komaram yovanam jara tatha dehantaras praptir dhirastatra namuyati. Krishna says, as the embodied soul passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. तो जिस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में मतलब बचपन से लेकर युवा ऐसे स्थानांतरित होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय एक शरीर से वो दूसरे शरीर में चला जाता है। And some people will argue, how can you say there is a soul? We can only see the body. Prove there's a soul. लोग ऐसा तर्क करते हैं कि आप हाँ आत्मा कहाँ है, आत्मा तो है, आप सिद्ध करो आत्मा है। Show me. दिखाओ हमें।
So with the doctor, he sees with the microscope. तो जो डॉक्टर होते हैं अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना चाहते हैं, He hears with the stethoscope. स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं कुछ। But the transcendentalists लेकिन जो अध्यात्मवादी है, sees and hears with the japamala. जपमाला के द्वारा वो उच्चारण करके सुनते हैं। Haribo. So it's a different kind of instrument. ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है अलग प्रकार का। You cannot see with the stethoscope. स्टेथोस्कोप द्वारा देखा नहीं जा सकता है। You cannot hear with the microscope. माइक्रोस्कोप के द्वारा सुन नहीं सकेंगे। So different instrument is required to understand the tattva, the truth. जो सत्य या जो तत्व को समझने के लिए अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। So to understand transcendental knowledge, we need to use the transcendental instruments. तो हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिव्य जो यंत्र है उसका उपयोग करना चाहिए। And the most powerful instrument in Kali Yuga is the Hare Krishna Maha Mantra. कलयुग में सबसे बड़ा प्रभावी जो तत्व है वो है महामंत्र। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So in this section of Bhagavatam, we're hearing the Uddhava Gita. Lord Krishna is explaining to Uddhav ji. तो श्रीमद् भागवत के इस विभाग में हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उद्धव गीता के रूप में तत्व को समझा रहे हैं। He's explaining to him that there's a difference between the body and the soul. तो भगवान समझा रहे हैं कि आत्मा और शरीर में भेद होगा। He gives the example of the lakri and the jal, the wood and the fire, agni. तो भगवान काष्ठ और अग्नि या लकड़ी और अग्नि का बोल रहे हैं। So you have agni and you have fire and you have wood, and the two things are different, alag alag. तो हमारे पास मतलब काष्ठ भी है, ईंधन भी है, ये दोनों अलग अलग हैं। So similarly, we have the body and we have the soul. They're different, alag alag. उसी प्रकार हम शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। Now in today's purport, Vishwanath Chakravarti is stating that some people may say, wait, how you can say body and soul is different? Because the fire is dependent on the lakri. Without lakri, how you can have fire? तो श्री विष्णु ठाकुर कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है शरीर और आत्मा अलग, क्योंकि जो अग्नि है वो काठ या लकड़ी के ऊपर निर्भर होती है। They're inseparable. उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। But Vishwanath Chakravarti Thakur says this is a material example. तो श्री विष्णु ठाकुर कहते हैं भौतिक उदाहरण है। That in order to understand it, we must see through the lens of Shastra. तो इसलिए श्री विष्णु ठाकुर कहते हैं कि हमें शास्त्र चक्षु के द्वारा इसको समझना चाहिए। We have to hear through Krishna's explanation. तो कृष्ण जो हमें समझाते हैं उसके द्वारा हमें ये ज्ञान देना चाहिए। In the purport, it's written, only through the Supreme Personality of Godhead's knowledge potency, Vidya, can we clearly understand the nature of the living entity. यहाँ पे बता रहे कि विद्या या असली ज्ञान से भौतिक जगत को खंड किया जा सकता है, इसी जीवन में आध्यात्मिक सत्य का अनुभव हो सकता है। So how can we see the truth? तो हम सत्य कैसे देखेंगे? Through Shastra Chakshus, Krishna's Vidya potency. कृष्ण की जो विद्या शक्ति है शास्त्र चक्षु के द्वारा समझ सकते हैं। Raja Vidya Rajaguyam Pavitramidam Uttamam Prajakshavāgamam Dharmyam Susukham Kartam Avyayam. Krishna says in Gita 9.2, Raja Vidya, this is the king of knowledge. तो भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं राज, ये जो ज्ञान है ये राज विद्या है। We're so fortunate by the mercy of Srila Prabhupada and his followers, we have access to this knowledge. तो हम श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की कृपा से ये हमें संभव हो रहा है इस ज्ञान को समझने। This knowledge of Bhagavad Gita, भगवत्ता का ज्ञान, which explains we're not this material body, we're an eternal spirit soul. तो इसमें समझाया जा रहा है कि हम भौतिक शरीर नहीं है, अभी तो हम शाश्वत आत्मा हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित्
na bhutva na bhavatava na bhuyaha ajo nityam shasvato yam parano na hanyate hanyamane sharire. For the soul, there's neither birth or death at any time. जो आत्मा आत्मा कभी भी जन्म या मृत्यु नहीं होता है. He does not come into being, is not coming into being, and will not come into being. ऐसे भी नहीं हुआ कि पहले इसका जन्म हुआ था, ऐसे भी नहीं हुआ, और बाद में भी जन्म होगा, ऐसे भी नहीं हुआ. He's unborn, everlasting, and primeval. तो ये कभी भी इसका ये अजन्मा है और ये नित्य रहता है. Nahanyate hanyamane sharire. He is not slain when the body is slain. तो जब शरीर की हत्या होने पर भी आत्मा की हत्या कभी नहीं होती. Vasamsi jirnani tata vihaya navani grinanti taropani tata sharirani vihaya jani nana navani navanti naroparani. That the soul is like a body with new clothes. When the person's clothes are torn, gives up the old clothes and gets new clothes. तो शरीर एक वस्त्र की तरह है, जैसे वस्त्र फट जाता है, कपड़े फट जाते हैं, तो उसको फेंक के दूसरे नए धारण करते हैं. So similarly, the Atma gives up the old body and takes on a new body. इसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, nachainam kledyankapo, nashoshayati marudaha. The soul cannot be cut by any weapon. तो जो आत्मा है, इसको किसी शस्त्र के द्वारा इसके टुकड़े नहीं किए जाते. Cannot be wet by the water. जल से इसको भिगोया नहीं जा सकता. Cannot be burnt by the fire. अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता. Cannot be dry by the wind. और हवा के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता. So the soul is different from the body. इसका अर्थ है कि आत्मा जो है, ये शरीर से भिन्न है. And we get this information from Bhagavad Gita, Raja Vidya, the king of knowledge. तो हम इस ज्ञान को भगवद गीता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसको राज विद्या कहा गया है. This is the Vidya Shakti of the Supreme Lord. तो ये भगवान की विद्या शक्ति है. And this will dispel the ignorance. तो इसके द्वारा हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा. So we're very grateful that Srila Prabhupada and his servants have given us this knowledge. तो श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के प्रति बड़े आभारी हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान हमें प्रदान किया है. Om Jnanatirmandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Because the Guru is giving us this knowledge, and by this knowledge all of our ignorance will be destroyed. क्योंकि गुरु जब ज्ञान प्रदान करते शिष्य को तब उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है. And if our ignorance is destroyed, we can experience the spiritual world right now, right here. जब हमारा अज्ञान नष्ट होता है, हम आध्यात्मिक जगत को यहीं पर इसी समय उसका अनुभव कर सकते हैं. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, our material existence is an artificial imposition. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार हमारा अस्तित्व कृत्रिम रूप से आरोपित है. So we're just misguided. We're in Brahm. We're in illusion. तो हमें सभी भ्रम में. We're under the influence of Maya. तो माया से प्रभावित है. Devi Yesha Gunamayi Mama Maya Durataya Mameva Ye Prapadyante Maya Metam Tarantite. That this powerful illusory energy, it makes us think, aham mameti, I, me and my. I think I'm this body. तो जो मोह में जो माया है, ये हमें मैं अपने शरीर को मतलब पहचान स्वयं के रूप में की जाती है. I think I'm young. I think I'm old. तो मुझे लगता है कि मैं जवान हूँ, मुझे लगता है मैं बूढ़ा हूँ. I think I'm man. I think I'm woman. मुझे लगता है मैं पुरुष हूँ, मुझे लगता है मैं स्त्री हूँ. I think I'm American. I think I'm Indian. मुझे लगता है कि मैं अमेरिकन हूँ, मुझे लगता है कि मैं भारतीय हूँ. This is all Brahm, all illusion. ये सब भ्रम है. Let's have an experiment here. अभी देखते थोड़ा प्रयोग करते हैं. How many Indians do we have in the audience today? तो आज हमारे इस श्रोतागण में कितने लोग भारतीय हैं? If you're Bharatiya, ऊपर कीजिए. Bharatiya log. Bharatiya. You're not Bharatiya log. You're in Brahm. You're illusion. आप सभी भ्रम में हो. You're spirit soul. आप आत्मा हो. This birth, maybe you were born in Bharat.
यार इस जन्म में आपने भारत में जन्म लिया In your previous birth, maybe you are a cow living in Mexico. हो सकता है कि आप पहले जन्म में मेक्सिको में एक गाय के रूप में होंगे So, we're not this body. हम ये शरीर नहीं Jivera Srupa Hoy Krishnera Nityadas. We're eternal servants of Krishna. हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं And we need this Vidya Shakti. We need this Vidya potency of the Supreme Lord to understand this. तो इस ज्ञान को समझने के लिए हमें भगवान की विद्या शक्ति चाहिए Vidya Shakti is available in 3 places. विद्या शक्ति 3 स्थानों में उपस्थित होती है Guru, Sadhu and Shastra. गुरु साधु शास्त्र के So द्वारा through these 3 sources, we can understand K Ami, who am I? तो इन 3 स्थानों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम वास्तव में है कौन Jivera Srupa Hoy Krishnera Nityadas. I am an eternal servant of Krishna. मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ So Krishna is explaining to Uddhava here in this 10th chapter of the 11th canto of Srimad Bhagavatam. तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इस 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे हैं And he's explaining to him that we're not this body, we're an eternal spirit soul. और भगवान समझा रहे कि हम शरीर नहीं अपितु शाश्वत आत्मा है Hare Krishna. हरे कृष्ण Are there any questions or comments? आप कोई प्रश्न या कोई समीक्षा है One time there was a lady, एक समय के बाद एक स्त्री थी महिला थी and she was an old lady, बूढ़ी थी and she was carrying a big bundle of lakri on her head. अपने सिर पर लकड़ी लेके जा रही थी It was very heavy बहुत भारी था वो। and it's difficult to get on her head. और सिर पे रखना भी मुश्किल हो रहा था She was walking through the forest. जंगल से गुजर रही थी Lakri fell down. और जो लकड़ियां थी नीचे गिर गई She lamented, "Oh, woe with me! तो अभी क्या करें Oh my Lord, please help me!" हे भगवान मेरी सहायता कीजिए And then Bhagavan came. और भगवान आते हैं Yes, what can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ Please help me. कृपया मुझे सहायता कीजिए How can I help you? कैसे सहायता कर सकता हूँ Please put the lakri on my head ये again. लकड़ियां जो मेरे सिर पे रख दीजिए So the Lord made the arrangements. भगवान तुरंत व्यवस्था कर दी She was happy. खुश हो गई She had big lakri load on her head. She kept और walking. जो भारी लकड़ियां थी सिर पे रख के चलने लगी So this is like our life in this material world. तो बहुत ही जगत में ऐसे जीवन चल रहा है We're suffering so much. हम इतना दुख भुगत रहे हैं And then when we ask the Lord for some help, आप भगवान को पुकारते हैं सहायता के लिए we want some fruit of benefit. तो हम क्या चाहते हैं कुछ लाभ हो We want some money. हम कुछ धन चाहते We हैं want a nice marriage. अच्छा विवाह हो हमारा We want good mundane education. भौतिक शिक्षा चाहते हैं हम We want a color TV, हम कलर टीवी चाहते हैं a house by the sea. और समुद्र के तट पर अच्छा Jai Jagadish Hari. Jai Jagadish Hari. Jai Jagadish Hari. A house by the sea, a color TV. Jai Jagadish Hari. So we're asking the Lord for some material benefit. तो हम भौतिक लाभ की कामना करते हैं भगवान से So we can quote unquote be happy. We think we'll be happy. हम कुछ रहना चाहते हैं But real happiness is not coming from material things. और भौतिक चीजों से कभी भी आध्यात्मिक आनंद नहीं प्राप्त The होता soul will never be satisfied until the soul goes back to the spiritual world. जो आत्मा है जब तक भगवान के धाम में नहीं जाता तब तक वो उसे आनंद प्राप्त नहीं होता There was a man in America. अमेरिका में एक व्यक्ति मनुष्य था He was fishing on the ocean. और समुद्र में वहाँ मच्छी पकड़ रहा था He caught a big fish. Oh, बहुत बड़ी मछली आ गई he said, what a big fish. कितनी बड़ी मछली है Amazing. आश्चर्य है And the fish said, और मछली ने कहा you are also amazing. तुम भी बहुत अद्भुत हो The man said, oh, a talking fish. अरे मछली बोल रही है Yes.
let's be friends. तो हम मित्रता करें आपस में. Okay, ठीक है. I want to show you fun, good time. अच्छा समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Let's go to दोनों जाएंगे. the shopping mall. शॉपिंग मॉल में जाएंगे. The man took the fish. और उस मनुष्य ने मछली को लिया. They went to the shopping mall. शॉपिंग मॉल में पहुंच गए. They went to the cinema. सिनेमा में गए. They sat there watching the cinema. दोनों साथ में सिनेमा देखा. The man bought the fish some popcorn. पॉपकॉर्न ने क्या है मछली के लिए. And the fish was eating the popcorn, और जो मछली पॉपकॉर्न खा रही थी. drinking Coca-Cola. But the fish was bored. There was nothing good on the screen. देखा कि उस स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा. He wanted to see fish. There were only people. केवल मनुष्य थे जिसमें मछलियां नहीं दिख रही. The machli said, "This is not good." मछली का नहीं ठीक नहीं है. The man said, "Okay, I'll show you good time. और अच्छा कुछ दिखा सकता हूँ. Let's go to the bar." बाहर में जाएंगे. They went to the bar. बाहर में गए. The man had a cigarette. और उस मनुष्य ने सिगरेट लिया. "Fishy, try this cigarette." मछली से कहा सिगरेट देखो. The man gave the fish the cigarette. तो मनुष्य ने उस मछली को सिगरेट दिया. The fish was smoking the cigarette. जब मछली सिगरेट फूंक रही थी. Oh, this is not good. नहीं ये अच्छा नहीं है. Take me back to my ocean. Put me back in the water. मुझे जल में छोड़ दो, समुद्र में छोड़ दो. The man said, "I know. I'll buy you a new car. मुझे पता है मैं तुम्हारे नई कार खरीदूंगा. A BMW car." BMW कार. They went to the car dealership. कार डीलर के पास पहुंचे. The man got in one side. एक मनुष्य उससे एक साइड में आ गया. The fish got in the other side. और जो मछली दूसरे साइड में आ गई. The fish started the engine. और जो मछली इंजन चलता रहा. The fish started to drive. और जो मछली ड्राइविंग करने लगी. But the fish had only one flipper from the gas and no foot for the brake. मछली जो थी एक्सीडेंट को दबाने के लिए उसका एक पैर था, लेकिन उसके भी पैर नहीं था दूसरा ये करने के लिए, ब्रेक दबाने के लिए. The man and the fish, they fell on the ground. The fish said, "This is not good. Please take me back to the ocean." So the man put the fish and took him back to the ocean. He threw the fish into the water. The fish began swimming and splashing around. And the man said, "Fishy, fishy, are you happy now? Aapka khush ho, aapka khush ho." Or fishy bol raha hai, "Ha, abhi main khush hu." Right? So the fish was happy, and the man was happy. So this is the story of the fish out of water. So I have a very important question for you. What is the important lessons that we learn from this story? Someone can say? Interactive session is going on now. Yes, Danadar Arjun Prabhu, please give him the mic. Yoga in its natural position will become happy. So its natural position is to serve Lord and then to live with Lord. So when Yoga will go back home back to God in Vaikuntha, then only we can become happy. We cannot become happy by the temporary pleasures of this world.
Jai, you can translate yourself, you know, right? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है उसमें हम खुश रह सकते हैं। मछली जैसे पानी में खुश रहती है उसी तरह हम आत्मा है, हम भगवान के धाम में जाकर ही हम वापस। Right. We're never happy in this world. This is not our natural place. तो हमारे स्वाभाविक स्थान में इससे हम यहाँ कभी खुश नहीं हो सकते। Our place is in the spiritual world, Adhyatmik Jagat. हमारा वास्तविक स्थान आध्यात्मिक जगत में। So to go to the spiritual world, we should practice Bhakti Yoga. तो हमें भगवान के धाम में जाने के लिए भक्तियों का अभ्यास करना चाहिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Did you like the story, Fish Out of Water? जो मछली पानी से बाहर कथा अच्छी लगी आपको? It's called the Happy Fish. इसका ये है कि Kushi Machli. खुशी मछली। Yes. And I like this story so much, I wrote a short song about this story. ये कथा मानने को बहुत अच्छी लगती है, इस पर उन्होंने गीत लिखा है। Would you like to learn the song? Please repeat after me. मैं जो कहूँगा मेरे पीछे कहो। I am a fish out of water. I am a fish out of water. I am a fish from the sea. I am a fish from the sea. I am a fish out of water, I am a fish out of water. seeking love eternally. Seeking love eternally. Okay, now there's some hand movements, okay? Go like this. I am a fish out of water. I am a fish out of water. I am a fish from the sea. I am a fish from the sea. I am a fish out of water, I am a fish out of water. seeking love eternally. Seeking love eternally. One more time. I am a fish out of water. I am a fish out of water. I am a fish from the sea. I am a fish from the sea. I am a fish out of water, I am a fish out of water. seeking love eternally. Seeking love eternally. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hare Hare Bol. श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की Jai. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna.